If you feel comfortable, we'll also be talking about menstruation and experiences around it, or anything else that you want to talk about, right? Thank you so much. And I hand over to Madiha to start a grounding exercise. Just get us comfortable, and then we'll start the session. Thank you. Before we begin, आप सबके पास एक शीट हुई आई होगी, उसमें आप प्लीज़ अपना कंसेंट डाल दीजिएगा टू बीइंग रिकॉर्डेड. कोशिश यही है कि हम लोग एक दूसरे को रिकॉर्ड ना करें. जो रिकॉर्ड हो रहा है, जिनकी ये ड्यूटी है, वो कर लेंगे. हम किसी की परमिशन के बगैर कोई इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं डालना चाह रहे, तो प्लीज़ लेट्स बी माइंडफुल ऑफ ईच अदर्स स्पेस एंड ईच अदर्स प्राइवेसी एज वेल. So I'm going to start off with asking everyone who can to please close their eyes. Just one second. Pehle to we'll start off with just being seated. If you're comfortable, please close your eyes and pay attention to the music. Now that we are all connected, and have shared this moment with each other, Madiha, I wanted to ask you actually, today's aaj ka jo ye session hai, is there anybody in this crowd who doesn't understand Urdu? Because if not, we can be bilingual or speak in Urdu. Is that okay? So everybody is okay with Urdu. So aaj ka jo topic hai says M word.
what does it mean? I mean, what does this M word stand for? And why are we looking at it as the M word and creating so much mystery around it? For well, one, my name starts with M. Are we gonna have a conversation about me? What about others? M से क्या होता है other than menopause? या एक तो चीज़ आपके सामने ही लिखी हुई है. पहले तो अगर हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे what else starts with M, which is often a woman's biological milestone. Menstruation. Huh? Motherhood. Motherhood. Very nice. Anybody else? So we have menopause, we have menstruation, and then we have motherhood. And we have marriage for people who want to get married. That's true. So there's so many milestones here that actually start with M word. Another word that starts with M is mystery, right? So do you think that there is a mystery associated with all of these words? And would you like to talk about कि किस word के साथ सबसे ज़्यादा mystery attached है? And let's make this interactive. G, you were going to say something, no? Okay. So, what's the mystery attached that we have to write M word G? Oh, can we have mics for our participants? Or would you rather not? Okay, you're without. Uh-huh. That's right. Yes. Absolutely, you can. This is your safe space. You can request him to also go out of the room if you want to. आप जो है ना सर्कल के बाहर ही रहें. Thank you. Yeah. और इनको ब्लॉक ना कीजिएगा please. Thank you for that. Yeah, anybody else? So what my friend here is saying, that menopause is the most mysterious of these words because usually it's hushed up and people don't, even mothers don't talk about it in their families with their daughters, etc. Anybody else would like to say anything about this? Yes. Mm-hmm. Great. So, and one thing that I wanted to just chip in here is कि also ऐसा भी होता है ना कि दोनों जो menstruation and menopause is of course the most hushed up because अगर आप पाकिस्तान का demographic dividend भी देखें, young people are emerging, they're going to schools, awareness बढ़ रही है, right? But menopause पर उस तरह से नहीं बढ़ रही है. So I just wanted to see what are the common things in menopause and menstruation. What are the common features in a person who just started menstruating or who's just going through perimenopause or menopause? Acceptance. Okay, that's a good word, yes. Hormones, both related to hormones. Very good. G. Emotional experience ho jata hai, mental health, hormonal, yes. Anybody else? Trauma. सही. Yeah. So it's trauma.
you feel traumatized that you didn't even know that this was going to happen with your body. Ji. बिल्कुल बिल्कुल उसके साथ वो एजिज्म भी अटैच हो जाता है कि अब आपकी उम्र आ गई है टू बी सो मैंने उम्र का लफ्ज़ सुना यहाँ पर, सो थैंक यू फॉर दैट क्यू. एक कॉमन चीज़ जो इसमें है वो ये है कि दोनों उम्र के दो सिरे हैं, राइट? और एक ऐसे सिरे जहाँ पर औरत जो है एक तो बालिग हो रही होती है और दूसरा सिरा वो है जो अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ से निकल रही होती है. आपने एटीट्यूड्स की बात की, तो यहाँ पर कोई बता सकता है उर्दू में मेनोपॉज को क्या कहते हैं? हाँ, वो that's another M word, you know, yeah. But menopause को क्या कहते हैं? मुझे भी नहीं पता था, सच्ची बताऊं तो. So menopause को उर्दू में कहते हैं संन्यास, हिंदी से आता है, ठीक है? और संन्यास का क्या मतलब हो सकता है? Leave everything. अच्छा, हाँ, ये भी एक तरीका उसको इंटरप्रेट करने का. एंड वेलकम टू द ग्रुप. एनीबडी एल्स? संन्यास का क्या मतलब हो सकता है? सन कैसे कहते हैं? सन 1940 कहते हैं ना. सन क्या है? ईयर, ऑल टाइम, यूर राइट. और अहद या दौर. यास क्या है? मायूसी, मायूसी, नाउमीदी, सैडनेस, यू नो, कि अब मेनोपॉज हो गया है तो संन्यास शुरू हो गया. दैट्स हाउ वी एंड आवर सोसाइटी डिफाइन मेनोपॉज, एंड दैट्स व्हाई वी नीड न्यू नेम्स, न्यू टर्मिनोलॉजीज. दैट्स व्हाई अभी तक एम वर्ड चल रहा है. कोई और चीज़ आपने देखी है कि जब औरत अपने ज़िंदगी के दो सिरों पे होती है, एक तो जब वो प्री मेंस्ट्रुअल या मेंस्ट्रुअल होती है या प्री मेनोपॉजल या मेनोपॉजल होती है, तो उसके बारे में लैंग्वेज क्या इस्तेमाल होती है? कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे संन्यास का एक एग्जाम्पल है. एनी अदर एग्जाम्पल दैट यू कैन गिव मी? इंग्लिश, उर्दू? So one for instance is people start using, oh, she's past her prime, or they're past their prime. Past your prime. Prime, you know, like इंग्लिश में कहते हैं प्राइम आपका पास हो गुजर गया. गया. किसने डिसाइड किया ये? उस औरत ने नहीं किया वैसे. Anybody else? Either menstrual, language around menstruation or language around menopause? Or age? These are the two extremes of the age, right? That's what we talked about. Ji. Around me, people being like, "Jaldi shaadi kar lo, jaldi bachche kar lo," because now menopause can happen at a very early age as well. Uh-huh. It's like a rush. yeah. Get married, get kids, because you don't लड़की स्पिंस्टर ना बन जाए, right? Because fertility से ताल्लुक है. अच्छा, ठीक है, बिल्कुल. Anything else? और हाँ, बिल्कुल, दोनों साइड पे PMS has been stigmatized, right? और कोई मेनोपॉज से भी गुजर रहा होता है कि अच्छा, I'm sorry but I have heard that कि अच्छा चलो अब तो ये सठिया गए हैं. सठिया जाना उर्दू का मुहावरा है. 60 साल के हो गए, सठिया गए, right? So not being taken seriously, you know, especially while a person is menstruating or a person is going through menopause. The idea is they're so emotionally charged that they shouldn't be taken seriously. कि उनकी emotions को invalidate किया जाए या उनकी feelings को invalidate किया जाए without understanding the root causes of it. But एक चीज़ ये भी तो है कि menopause को हम एक बहुत narrow तरीके से भी तो देख रहे हैं. मेनोपॉज जैसे कि बस फौरन स्टार्ट हो जाता है, फौरन ख़त्म हो जाता है, पर ऐसा तो है नहीं. I mean, we have benchmarks. We have a cycle that actually starts maybe at an earlier age, but can last sometimes for 7-8 years, which is the perimenopausal stage. Maybe you can tell और us. सबके लिए डिफरेंट होता है पेरीमेनोपॉज. कुछ लोगों के लिए 10 साल पहले शुरू हो जाता है. एंड साइंस इज सेइंग कि अगर आपके पीरियड्स 50 या 51 ईयर्स पे ख़त्म हो रहे हैं, योर पेरीमेनोपॉज probably started 10 years ago, Yeah. 5 years ago, for some people 2 years ago. But I would like to circle back to that language thing first, you know, because that's my passion. And sorry if I'm imposing No, that on you. not at But
So we saw सठिया गए हैं, right? We saw past your prime. Anything else that comes to your mind when a woman who is older but wants to take care of herself, what do we call her? बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम. क्या मतलब है इसका? Right? What does it mean? Does our wanting to look good or feel good or dress nicely and socialize, जैसे ही कोई करना शुरू कर देता है तो इनको देखो, उम्र देखो और ये देखो करतूत, right? यहाँ ये भी कहते हैं, there is another one which I just remembered, खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम थी. किसी ने ये शेर सुना है? बहुत मशहूर शेर है. खंडर बता रहे मतलब अब तो खंडर हो गई हो, मगर अजीम हो रही होगी कभी तुम, ऐसा ही है. And what happens when a woman listens to this? So you used a word trauma. Thank you for that. This is the trauma, the microaggressions women face on a daily basis, you know. And if not from their family, then from the next circle or from the media or society as a whole. ऐसा लगता है? होता है? Yeah, please. Yeah. Yeah. May I just thank you for sharing that. That is a very important sharing, and thank you for feeling generous with us, because everything that you guys are sharing, that's a generous sharing. May I just request the volunteers sitting here, volunteers, sorry, could you make sure that these people are not talking? And sorry to make you get up, but so you're so right. And I think that's a very sensitive sharing कि आपको invalidate कर दिया जाता है कि यहाँ तो ये बहुत PMS में है, यहाँ बहुत छोटी है, यहाँ फिर अब ये अपने बुढ़ापे की तरफ चली गई है. So in this talk, in the next leg of this talk, we want to talk about what makes you feel good about being the age that you are. Yeah, just आगे. ठीक है? आपने हमसे शेयर करना है, जो कंफर्टेबल है वो करे, जो कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल नहीं करे, कि इस वक्त आप अपनी एज के जिस दौर में हैं और as a woman, या जो भी आपकी gender identity है, what do you feel like? What is the best thing about it? Yeah? Anybody wants to share? Yes, Aisha.
Thank you. They have to. बिल्कुल जी. So that's absolutely true. That love can be in any form and it can manifest in any sort of relationship. दोस्तों में भी तो प्यार होता है, वो भी तो एक community होती है. But coming back to maybe कि हम क्या अभी एक छोटी सी exercise करने जा रहे हैं, where we'd like you all to just take 5 minutes and think about what it is that you like about yourself. Like, what is it, something that you can do that you think others can't, or like, you know, something that makes you feel good about yourself. I can start with saying that I really like my ability to be an empath. I think I associate a lot of love and support to the people that are around me, and I actually really like that about myself. So anyone else want to volunteer? Much for sharing that. And the fact that you're able to change means that it, that change that works for you, which is positive for you, and you're in control of that change. Thank you for sharing that. Yes, please. Yeah, very nice. I'll share about myself. I'm 47 years old, and what I like about myself at this age is that I feel I have been able to self-care more, you know, in the past, especially in the past 2 years. I felt that even though I'm in perimenopause, I'm sure, you know, that's the age that I'm going through. But I've started thinking about myself more. Maybe it's because मैं हर वक्त सुनती हूँ कि ये टेस्ट करा लेने चाहिए, अब ये मेमोग्राम करा लें आप, राइट, एंड पेप स्मेयर ज़रूर कराएं, एंड थिंग्स लाइक दैट. और उससे ये होता है कि मुझे अपने बारे में ख्याल आता है और मैं सोचती हूँ कि अच्छा अब मुझे अपनी सेहत के लिए क्या करना चाहिए. सो वन थिंग दैट आई स्टार्टेड इज़ ट्रेनिंग, फिज़िकल ट्रेनिंग. तो पिछले 4 साल से आई बीन फिजिकल डूइंग फिजिकल ट्रेनिंग एंड डांस फॉर माई ओन सेल्फ केयर एंड फॉर माई ओन मेंटल हेल्थ. या Is that okay the way I phrased it? Okay, great. Thank you for that. कोई भी और जो बताना चाहे कि इस वक्त इस एज में what makes you feel best about yourself. And welcome to the group. आप अभी आए
जी ओ और दूसरा ये कि आपने नोट किया इनकी बात में कि वो कह रही हैं कि शायद 10 साल पहले चल you're moving in a direction where you want to move in, Yeah. you're growing and courage भी आ रहा है जी आपके साथ. आपका एक कमेंट था Thank you for sharing that. Thank you for sharing that. And anybody else? Yes, please jump in. So as a follow-up to what yeah absolutely जी So there's also another thing. You see, एक तो आपका normal जो life cycle है उसमें menopause एक
जी मैंने मेरी किसी पेशेंट ने मुझे ये फीडबैक नहीं दिया कि दे हैव दिस हॉट फ्लशेस जिसमें आपकी पूरी स्किन जो है वो कलर चेंज करती है। हॉट फ्लशेस मीनिंग तो प्रोबेबली यू फील वार्म इन द नाइट व्हेन यू डिडंट, लेकिन वो मूड स्विंग्स का भी है कि इफ यू फोकस ऑन दिस थिंग्स यू फील देम मोर। मुझे तो पता ही नहीं चलता था, वो तो सारा वक्त हम काम में ही लगे होते थे, ये चीज़ें पता ही नहीं चली। सो मे बी इट इज़ ऑल्सो माइंड ओवर मैटर थिंग कि अगर आप अपने आप को फोकस, जैसे महनाज कह रही हैं कि उन्होंने अपने आप को एक तो लिबरेटेड भी फील किया एंड देन वो फ्रीडम थी कि हम कुछ भी कह सकते हैं, और फिर उसमें ये स्पेस हम दूसरों को भी दे सकते हैं कि इफ दे आर सेइंग ये स्टैंडिंग बिहाइंड देम। पहले हम में वो करेज नहीं होती थी, पहले हम भी उनमें से होते थे कि रोके नहीं नहीं ऐसे नहीं कहो, इस टोन में ही नहीं कहो, ये अल्फाज मत कहो। नाउ आई मीन ट्विटर इज अ बैटल ग्राउंड एंड आई सी द बैटल्स बीइंग फॉट ओवर देयर एंड देन आई एम बिहाइंड दोस यंग गर्ल्स हु आर यूजिंग द काइंड ऑफ tones that they are using. I somehow still have that hang up about not using cuss words. But other than that, those are justified in many cases in our society also. पर आफिया आप अगर सोचें हम बहुत सारी चीज़ें इंटरनलाइज भी कर लेते हैं, तो हम जब बीमार भी होते हैं या हम परेशान भी हो रहे होते हैं, हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते थे। आई मीन एज पीपल हु was seen as emotional or people who are seen as irrational, कभी कभार हम अपनी इमोशंस को सप्रेस करते हैं ताकि हम इनवैलिडेट ना हो जाएं, तो हम अपने आप को ही बहुत सेल्फ सेंसर करते हैं और करते रहे हैं। बट इंटरेस्टिंगली इनफ अगर आप ये लिस्ट देखें ना, तो दीज आर सो पर्सनल, दे सो सब्जेक्टिव, बट people that look like women, people that are considered women, उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं कि this is what they're worth. And a lot of that is attached to our reproduction. A lot of that is attached to our ability to become mothers. Or a lot of, we peak when we're in our 30s and then, we dip when we cross those. So, आप क्या समझते हैं कि जब हमारी उम्र के हिसाब से, whether we look at it at the menstruation age or whether we look at it at the menopausal age, what are some of the things that you think Pakistani societies consider when they, or what they associate with us as people who menstruate? अभी तो आपने ये बातें की ना कि आप कैसा फील करते हैं। है ना कि अभी हमने इस्टेब्लिश किया कि हार्मोनल चेंजेस हैं, कुछ को तो ऑपरेशन के बाद हुई या कुछ को अर्ली हो गई, मतलब देयर इज़ डेफिनेटली अ बायोलॉजिकल फैक्टर फॉर इट, जो कि डायबिटीज़ में भी होता है। अक्सर लोगों को 50-60 साल के बाद अब डायबिटीज़ कॉमन हो गया है, हाइपरटेंशन कॉमन हो गया है। जितना अटेंशन डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को मिलता है, क्या आप समझते हैं कि मेनोपॉज को वो अटेंशन मिलता है? हाँ, खामोश। या बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मगर बॉडी की जो नीड्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, या हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, या चिड़चिड़ापन हो रहा है, या ईस्ट्रोजन के हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं, आपको पता है ब्रेन में भी हैं, स्किन में भी हैं, समटाइम्स इट्स रिलेटेड टू मेमोरी लॉस, इरिटेबिलिटी, एंड देन ऑफ कोर्स सो ये सारी चीज़, वेजाइनल ड्राइनेस, also different attitude or different biological reaction towards intimacy, right? ये सब तो होता है। weight gain कुछ लोगों में होता है,
बिल्कुल जी. Talking about the society, I also feel that people who don't like men, people from other gender who recognize themselves as men, they also understand it in a way that favors them. So they would accept the part of it कि अच्छा moody हो रही है, ये हो रही है, इससे हमसे सही से बात नहीं करी, but they wouldn't accept the phase that it's painful, it's hurting them, they need a break. So they would take out the meaning. They'll understand that this exists, but they'll take out the meaning that favors them, rather understanding our needs better. Thank you. So basically I'm signaled by the organizers कि हमारे पास बहुत ज़्यादा time नहीं है. But I think what we have started today is a conversation. ठीक है? और हमने converse किया कि कैसे हम अपनी ज़ुबान change कर सकते हैं. हमारी जो ज़ुबान है, जो मुहावरे हैं, जो एक औरत के बारे में होते हैं, जब वो बूढ़ी हो रही होती है या वो ड्रेस अप होती है, उनमें से कुछ बहुत पेनफुल हैं, ट्रॉमेटिक हैं कि और वो चेंज होने चाहिए. सोसाइटल रवैये चेंज होना चाहिए. दूसरा हमने डिस्कस किया कि औरत का अपना परसेप्शन क्या है इस वक्त. So many of you have done, put so many nice and positive things about yourself at this stage in your life. How to continue on that journey. एक चीज़ हमने ये की कि यहाँ पर एक प्लान किए बगैर हमने एक intergenerational dialogue किया, right? So many generations sitting over here, and we talked to each other, and we shared our energies with each other, so thank you for that. So what we wanted to end on is, जैसे कि महनाज आपने कहा, she also happens to be my mother by the way, जैसे कि आपने कहा कि she got so liberated, कुछ ने कहा मैं लिबरेट हो गई, एंड आफिया आपने उसको वो किया, which gives us a lot of hope, especially 47-year-olds like me. I get a lot of hope, जिसका for whom menopause could be imminent any day, right? So that really helped me. But then what can be the role of the support? What is the support system for a woman in this age? And now I'm talking specifically about menopause. What is your support system? Who is your community? What do you need more of? And the conversations need to continue because आपको वो services नहीं मौजूद होती हैं जो जिसकी आपको ज़रूरत हो सकती है, या when a woman or a person is going through menopause, for instance, अगर उसको अपने ही symptoms नहीं पता या अपने ही जिस्म को वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो डॉक्टर को कैसे समझाएंगे about what they need? And interestingly enough, Afia, you brought it up, South Asian menopause के ऊपर इतना literature भी available नहीं है. So the more we talk about things, the more we push people to explore these avenues, explore these areas so that we're able to better support ourselves. तो ये conversation हमेशा होनी चाहिए, continued होनी चाहिए. Menstruation के ऊपर भी South Asian context इतना available नहीं है, but it's still far more discussed because of its different associations. But with menopause, I think we're still a little behind, and it's important to start somewhere. So let's keep talking. Let's Any keep supporting each other. for a support system? Ji. Children of the woman. I've seen my mother go through menopause, and I think we played a very big role in her life because she herself was not able to understand what's happening to her. She was just throwing tantrums in the house, and we were accommodating. I think that's important because I saw my dad not being accommodating, so I was like, you know what, it's okay. He's just going to be a man, so we have to be there. And we got our brother as well to be accommodating about it, which is important, so that he can do the same with other women in his life. Anybody else? Let's end on that note. How can we support each other? Yes. Men should be a part of this conversation. We have a man, Gibran, sitting here. Listening to our conversation. Absolutely. What the suggestion I just got was that men should be a part of this conversation. So next time, maybe when we plan this, we'll hope to have more men in here. Right now, we were actually told by the organizers to keep it low key, use the M word, create a mystery around it. So thank you so much. Thank you.